तो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ और बेटर अंडरस्टैंडिंग डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो डीएनएस के लिए क्या करते हैं, पहले ये हमारा डीएनएस सर्वर है और इस डीएनएस सर्वर पे हम आते हैं और हम एक होस्ट क्रिएट करते हैं cisco.com। और ये cisco.com का आईपी एड्रेस हम दे देते हैं। इसका जो आईपी एड्रेस जो पूरे एनवायरनमेंट का आईपी एड्रेस है, डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस दे देते हैं। पहले डीएनएस सर्वर को आईपी एड्रेस ले लें, देखते हैं क्या आईपी एड्रेस को मिलती है। अभी इसको ही आईपी एड्रेस नहीं मिली हुई है। व्हाट आईपी एड्रेस इट गेट्स 4। ओके, सो लेट्स डू वन थिंग कि जो डीएचसीपी सर्वर है उस पे हम डालते हैं 10.0.4 10.0.0.4 because it will always be getting the same IP address. Okay, so let's see what it gets from the DSCP. Great, you can see here the IP address of the DNS server that we are getting is 4। यहाँ पर नहीं है क्योंकि प्रीवियसली 00 था, अभी हमने चेंज किया रिसेंटली। अगेन वी गॉट इट अपडेटेड। ग्रेट, ऑसम। सो यू कैन सी हियर कि हम रिमोट से एक्सेस भी ले पा रहे हैं फ्रेंड्स, और हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है, सब चीज़ कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। अब अगर कम्युनिकेशन चेक करना है तो हम यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन भी चेक कर सकते हैं लाइक दिस, कैन सी सक्सेसफुल। And similarly, we can send here to here, like successful. We can initiate inter-VLAN communication as well. So as you can see here, the communication is happening between this and this, and the communication is happening for this and this, this. Everything is now communicating with each other, and we have successfully configured this architecture without even a single facing any single hasher. Okay, so now congratulations friends that you have successfully configured this architecture where we have deployed. It's a kind of implementation. Okay, it's a kind of implementation. Now let's do one thing, like if we want to set a DNS configuration on the router level. So what we can do now, we can do here one thing, like when we exit, let's do exit, and when do DSCP only. Okay, what it happens, DSCP doesn't have anything. So the reason we are getting this domain server as this, because we have not configured any DNS on router. Okay, so what we have to do, we have to configure IP name server and then IP address of the DNS server that we have set it at this. Now to write, and if we do the same thing DSCP, it will be asking for this one. Okay, so what we can do now, we can do telnet by just hitting DHCP now Mumbai.Cisco.com. Okay, you can see here that we are successfully able to reach out to the Mumbai from this Delhi router to this using its host name. This is possible just because of DNS server that we have cited here. One more thing that we have this one more thing that we have this web server. So this web server, let's configure one web server here for you, and that web server will be named as HTTP server, and this HTTP server, okay, so this is the web server, so that we can do here, and we can check by just visiting a web browser. थ्री, ओके, सो थ्री में क्या कर सकते हैं, 10.0.0.3 and go. So there we have. Okay, so we have a web server running on this
So we can create we can create one more DNS record for our web app server that will be like web.cisco.com, and it will be having an IP address 10.0.0.4, and we can add it here. Okay, so now what we can do now, let's try to access this web app service from the remote server or the remote client. We just click down and do one thing, web.cisco.com. Okay, so it didn't resolve. Let's do one more thing, one more time, and no problem. I guess we have to check it one more time. DNS hub.cisco.com. Oh, that's the problem here because we set incorrect IP address. The IP address of the web server was the IP address for the web server was 3, okay, not 4, it was 3. So we have to change the record that we have set incorrect. So इसी तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कि incorrect रिकॉर्ड अगर कर देंगे तो हमारा रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा. ओके, अगेन हम लोग चेक करते हैं, डेस्कटॉप पे आते हैं, ब्राउजर पे जाते हैं और वेट करते हैं ब्राउजर के ओपन होने का, जो कि पहले हमें दिखा रहा था अनरिजॉल्व. अब देखते हैं हमें क्या शो अप करता है, जो कि अब हमें सक्सेसफुली दिखाना चाहिए. और स्टिल वी आर गेटिंग इनकरेक्ट थिंग. ओके, नो प्रॉब्लम. लेट्स डू वन थिंग कि हम एनएस लुकअप करते हैं web.cisco.com. ये सर्वर रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है इस आईपी एड्रेस को. आई डोंट नो व्हाई. web.cisco.com. Okay, and DSCP relay is something like your DSCP is present in somewhere else and your client are present somewhere else and requesting for a DSCP IP address. So using DSCP relay, we create a DSCP server. We create a DSCP relay to get assigned an IP address on the client side. All right. So we have set the password. We have set telnet on router as well. ओके, सो व्हाट आर वी डूइंग नाउ कि अभी हमने आपके लिए सारी चीजें की, डीएससीपी टेलनेट और ये सब चीजें कॉन्फ़िगर की जो हमने आपसे पहले वादा किया था. अभी इसको हम क्या करेंगे, इनको ब्रेक करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में. आप उनको देख सकते हैं वन बाय वन एज पर द कैटेगरी, एंड एक कंप्लीट भी हम अपलोड करेंगे इसके लिए, उसके लिए आप देख सकते हैं. ओके गाइस, थैंक यू फॉर watching the video. Have a good day ahead.